Hello, Matujima, and you're watching Northeast Express on HornbillTV. 10 people, including 4 children, have lost their lives in the last 24 hours due to floods in Assam, according to the State Disaster Management Authority (ASDMA). 3 people died due to floods, each in Sivsagar and Jorhat district, 2 in Charideo district, and 1 each in Dhemaji and Karbi Anglong district. So far, 41 people have lost their lives in the state due to floods, ASDMA said in its flood report. On the other hand, 6 others, including 3 males and 3 females, are still missing. The flood situation in the state is still grim, as over 6.53 lakh people of 11 districts Karbi Anglong, Golaghat, Charadeo, Kamrup, Sivsagar, Jorhat, Dibrugarh, Nagaon, Dhemaji, Hojai, Kamrup have been affected in the current wave of flood. 939 villages and the 40 revenue circles are still under water. Following incessant rainfall, the water levels of the Brahmaputra River and its tributaries are rising in many places in the state. The water level of the Disang River is flowing above the highest flood level at Nagla Muragal. The water levels of Puriding River at Chenimari Kowang, Diku River at Sivsagar, Tansiri S River at Numarigarh, Kushiara River at Sribhumi FFS are flowing above the danger level. MLA Akhil Gogoi on Thursday criticized the Chief Minister over the flood situation. एक्सपेल किया अपर असम में असम का 3 डिस्ट्रिक्ट में चौराइदेव, शिवसागर और जोरहाट बोल के 3 डिस्ट्रिक्ट है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट को पूरा खत्म हो चुका। डिवास्टेटिंग फ्लड हो गया, हेवोक चल रहा है, हेवोक पूरा टोटली खत्म हो चुका। कभी किसी नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, उड़ीसा में कभी ऐसा बड़ा डिवास्टेशन होने से इसको नेशनल कैलामिटी माना जाया हुआ है। लेकिन आज तक 3 डिस्ट्रिक्ट खत्म हो चुका। आज 28 एक पंचायत में एक क्या पंचायत को क्या बोलता है हिंदी में, एक पंचायत में आज 28 लोगों का डेड बॉडी निकला। 3 डिस्ट्रिक्ट पूरा खत्म हो चुका। शिवसागर टाउन असम हिस्ट्री का सबसे हिस्टोरिकल टाउन है। इसमें इतना तक पानी है टाउन में। शिवसागर जो हिस्टोरिक टाउन इतना पर टाउन है, ये है। नागालैंड पहाड़ में बड़े बांध बंधा रहा है, इससे पानी आया है। असम का पॉलिटिशियन हिमंत बिश्व शर्मा जी और असम का पॉलिटिशियन क्या नाम है, जयंत मल्ल जी, उस लोगों ने जो कोयला का खनन करता है इलीगल नागालैंड में, इसका अंदर में पहाड़ का अंदर में लेक बन गया है, इससे पानी आ रहा है, बड़े डैम से पानी आ रहा है। बोल्डर एक्सटेंशन चल रहा है, इसीलिए पानी आ रहा है। हम लोग का 3 डिस्ट्रिक्ट को पूरा खत्म कर दिया, कैटास्ट्रोफिक हेवक हो गया, खत्म। 100 ऑफ पीपल अभी तक कोई पता नहीं है, लापता हो गया है, क्या हुआ। लेकिन अभी तक सरकार से रेस्क्यू ऑपरेशन भी कुछ नहीं है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया, क्योंकि इतना बड़े कैटास्ट्रोफिक हो गया कि गवर्नमेंट का मालूम ही नहीं था, एसएसपी नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, अभी तक 1 लीटर पानी भी नहीं पहुंच पाया, साबुन नहीं पहुंच पाया, दाल नहीं पहुंच पाया, बिस्कुट नहीं पहुंच पाया, ब्रेड नहीं पहुंच पाया। कोई रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन नहीं हो पाया है। मैं असेंबली ने आज हम लोग का जो रूल बुक है, रूल बुक का असम असेंबली का जो रूल एंड प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसका रूल अंडर 56 से मैंने एडजॉर्नमेंट मोशन सभा स्थगित प्रस्ताव लाया था, लेकिन मुझे नहीं दिया, मेरे को एक्सपेल कर दिया, बोला नहीं होगा। 2 मिनट बाद बोला था, मुझे एक्सपेल कर दिया। इसीलिए मैं असम असेंबली का वो जो डेस्क होता है ना, बेंच होता है ना, सीट होता है ना, इसमें खड़ा होकर मैंने प्रोटेस्ट किया और मेरे को बाहर कर दिया। मैं बोलता हूँ, मैंने हाथ जोड़ करके आज अध्यक्ष जी को, स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बोलना दीजिए। मैंने असम गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के बोला था कि मुझे बोलना दीजिए। मैंने ऑपोजिशन कांग्रेस को रिक्वेस्ट किया था, आप लोग मुझे बोलना दीजिए, नहीं दिया। आज कांग्रेस भी ऐसा है, बीजेपी भी ऐसा है, और अध्यक्ष जी ने भी हम लोग का अपर असम का सबसे बड़ा जो हेवक हुआ, सबसे बड़ा कैटास्ट्रोफी हुआ,
इसका ऊपर बोलने नहीं दिया है। इसीलिए मुझे आज एक्सपेल कर दिया। और जब तक इस इशू को नेशनल कैलामिटी नहीं माना जाएगा, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट पैकेज नहीं देगा, जब तक असम का पूरा मशीनरी नहीं लगेगा, तब तक मेरा जो प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट चालू रहेगा और चालू रहेगा। The Tripura Pradesh Congress Committee, Youth Congress and the National Students Union of India (NSUI) on Wednesday staged a protest in Agartala against the alleged police action on student protesters in Delhi and alleged irregularities, including question paper leaks and competitive examinations such as NEET. The protesters took out a rally through different parts of the city and later burned an effigy of Union Education Minister Pentagon. Congress Working Committee CWC member and MLA Sudeep Roy Barman, along with leaders of the Pradesh Congress, Youth Congress and NSUI participated in the demonstration. Addressing the gathering, Roy Barman alleged that the police had used force against students in Delhi who were agitating over their demands. He said students have the democratic right to hold peaceful protests and alleged that the centre was attempting to suppress such movements. The Congress leader also alleged that question paper leaks and other irregularities had occurred in 152 examinations, including NEET, during the last 12 years, adversely affecting the future of lakhs of students across the country. He called on students to unite against corruption and irregularities in the education system and said democratic protests were the appropriate means to safeguard their rights. As part of the protest, demonstrators burned an effigy of the Union Education Minister and demanded a fair investigation into alleged examination irregularities and strict action against those responsible. There was no immediate response from the centre or the Union Education Ministry to the allegations made by the Congress leaders. Senior Congress leader and AICC Media and Publicity Department Chairman Pawan Khera appeared before the Assam Police Crime Branch in Guwahati on Thursday for another round of questioning in connection with a defamation case filed by Rinki Buyan Sarma, wife of Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma. Khera arrived at the Crime Branch office, briefly spoke to reporters before entering the premises. He said he had always respected the law and would continue to cooperate with the investigation whenever required. While responding to questions from the media, the Congress leader also touched upon several national issues. The case against Khera stems from remarks that he made during the 2026 Assam Assembly elections campaign when he alleged that Rinki Buyan Sarma possessed multiple foreign passports and undisclosed foreign assets. The allegations were rejected by both the Chief Minister and his wife, who termed them false, baseless and politically motivated. Following those remarks, Rinki Buyan Sarma filed a defamation complaint with the Assam Police Crime Branch, which subsequently registered a case and began its investigation. The Supreme Court has granted Khera interim protection from the arrest while directing him to cooperate with the probe. Thursday's appearance was Khera's third visit to the Assam Crime Branch in connection with the case as the investigation continues. What would you like to say also? No, whatever I have to say, I'll say inside. Whenever they call me, I try and come. Last 2 times I could not come because of once it was ill health and the other time I was preoccupied for the Rajya Sabha formalities. Now I am here. आपको पहले भी बुलाया गया था, आप नहीं आए यहाँ पे? हाँ, पहले मेरी तबीयत एक बार खराब थी, एक बार राज्यसभा की कुछ फॉर्मेलिटीज थी,
इस वजह से नहीं आ पाया, लेकिन मैं प्रयास यही करता हूँ कि जब भी बुलाते हैं मैं यहाँ ज़रूर आऊँ। देखिए, इससे पहले भी आपको 2 बार आपसे पूछताछ किया गया, उसके बाद फिर से आपको बुलाया गया। आज क्यों बुलाया गया, वो उस बारे में कुछ बताया आपको? हम तो कानून का पालन करेंगे, जितनी बार बुलाएंगे मैं हाजिर हूँगा, मैं पूरा सहयोग दूंगा जांच में। मिस्टर सीजेपी के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली में, उस पर पूरे देश में नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कोटा में और फिर देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम भी किया और लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। नौजवानों के हितों की रक्षा करने के लिए बार बार पेपर लीक होते हैं। 152 बार पेपर लीक हुए हैं। पिछले 5 साल में 93 बच्चों ने आत्महत्या की। तो ये अपने आप में सबको चिंता का विषय होना चाहिए, मीडिया के लिए भी, विपक्ष के लिए भी और सरकार के लिए भी। लेकिन सरकार के मन में कोई चिंता नहीं दिखती। दूसरा, अपर आसाम में जो बाढ़ आई रखी है, बहुत गंभीर बाढ़ है। कई लोग लापता हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। गौरव गोगोई जी हमारे सांसद हैं, लेकिन राहुल जी ने उनको आदेश दिया कि आप आसाम जाइए, तो इसलिए वो संसद छोड़कर भी आसाम का उन्होंने दौरा किया। हम सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि जो नुकसान लोगों का हो रहा है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। Sir, why the opposition is selective when it comes to paper leak? Because you have raised the issue of need paper leak, no doubt, but several state boards, starting from Tamil Nadu to NTA should be a constitutional body. It should be a statutory body, but NTA has been registered under the Societies Act, and the person heading the NTA is an RSS man. There is no permanent employee. Everything is given on contract, from paper setting to printing to transportation to paper checking. Everything is given on contract. Who gets the contract? All the people close to the RSS. Therefore, our question is, why have you deliberately created an organization which has a lot of scope for corruption? But what about the state boards, sir? State board like Everywhere, exams need to be held transparently. Now, you can't say that because there were 2 or 3 or 4 paper leaks in Tamil Nadu, therefore we cannot raise our voice against paper leaks. Do you know how many paper leaks happen in Gujarat? Gujarat is a record of paper leaks. Thank you. Thank you. जितनी बार बुलाएंगे आऊँगा। मतलब मामला गंभीर है क्या, आपको क्या लगता है? क्योंकि नियम और कानून के हिसाब से सहयोग करना है। Tripura Chief Minister Dr. Manik Shah on Wednesday criticized Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi over his protests outside Prime Minister Narendra Modi's official residence, alleging that the Congress was attempting to create political unrest instead of engaging in parliamentary debate. Speaking to reporters at the BJP state headquarters ahead of a party organizational meeting, Shah said protests were a legitimate part of democracy but should not replace participation in parliament. He alleged that the Congress had initially demanded a discussion on the NEET paper leak issue in Parliament and later shifted its demand to seeking the resignation of Union Education Minister after the government agreed to hold a debate. The Chief Minister also claimed that the opposition was facing an existential crisis and accused it of trying to replicate political movements witnessed in neighboring countries. India is not Nepal or Bangladesh, Shah said, adding that in his view, the protests were politically motivated. He further claimed that social media videos suggested the participation of people other than students at the protest sites. না কি বলবো, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে ধিক্কার জানাচ্ছে, আমিও ধিক্কার জানাবো। এবং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন খুব হাইলি সিকিউরড এরিয়া, তো সেই জায়গায় গিয়ে যেভাবে ওনারা ওখানে বসেছেন এবং অবস্থান করেছেন, সত্যি এটা অবাক লাগে যে ঠিক আছে, গণতন্ত্রের মধ্যে সবই চলে, তো সেই জায়গায় যখন পার্লামেন্টও গিয়ে ওনারা কিছু বলছেন না। প্রথমে বলছেন কি যে আলোচনা যদি রাজি থাকে তাহলে আমরা স্ট্রাইক উইথড্র করব বা কোথাও ধর্ণা আমরা উইথড্র করব। যখনই রাহুল গান্ধীকে জিজ্ঞেস করা হল যে যদি আমরা রাজি হই যে সব বিষয়ে, শুধু নিটের কেলেঙ্কারির বিষয় না বা অন্য যে কোনো বিষয়ে, সব বিষয়ে আমরা আলোচনায় রাজি, তাহলে আমরা এই ধরনের ধর্ণা উঠিয়ে নেব। কিন্তু তারপরে কি বললেন যে না, আমরা শিক্ষামন্ত্রীর এখন রেজিগনেশন চাই। তো ওনাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আগে তো বলেননি, বলে এটা আমার ইচ্ছা। এখন আমি আমার মাইন্ড বলছে এখন ওনার
যে রেজিগনেশন আমি চাইবো। তো এক এক সময় এক এক রকম ইউটার্ন নিচ্ছেন উনি, এবং শেষ পর্যন্ত রাস্তায় নেমে ওরা স্টুডেন্টদের জন্য বলছেন না, ওনাদের অস্তিত্ব করছে, এটা বোঝা গেল। এবং এইভাবে করাটা উচিত হয়নি। যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির বাসভবনে যেভাবে ওনারা বসেছেন, সেটা করাই উচিত নয়। আমি এর জন্য মানে ধিক্কার জানাবো যে এই ধরনের, এবং ওনাদের সাথে আলোচনা করার জন্য মিনিস্টার গেছেন, মিনিস্টার গিয়ে কথা বলছেন যে আপনারা এখান থেকে যে ধর্ণা আছে সেটা উইথড্র করুন, তো উনি কথাই শুনতে রাজি নয়। এবং যেভাবে ওনারা এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খল একটা পরিবেশ জন্য সারা ভারতবর্ষে চলে, তার জন্য এদের এই মানে স্ট্রাকচার্ড যে ঘটনাগুলো করে যাচ্ছে ওরা, এটা উচিত নয় আর কি, বাঞ্ছনীয় নয়। স্যার, রাজ্য না, আমাদের এখানে তো আজকে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ থেকে একটা প্রতিবাদ মিছিল বের করেছে। অত্যন্ত প্রচুর আমাদের কার্যকর্তারা, মানে এক ঘন্টার মধ্যে প্রচুর কার্যকর্তারা এসেছে। তো এই বিষয়ে তো আপনারা জেনেছেন যে একটা প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে, সারা ভারতবর্ষেই এর প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে। এবং কংগ্রেস আসলে ওনাদের নিজেদের অস্তিত্বই নেই। ওরা চায় যে এগুলো নিয়ে বেঁচে থাকা, এবং শুধু কংগ্রেস না, ইন্ডিয়া জোটের যে সমস্ত যারা ওদের সহযোগী সবাই এই দিকেই ব্যস্ত। আসলে স্টুডেন্টদের জন্য ওনারা কথা বলছেন। এবং এমনও দেখা গেছে যে এই আন্দোলন, এইবার যে আন্দোলন হলো, সেই আন্দোলনের মধ্যে স্টুডেন্ট কম, অন্য লোকে বেশি। এইগুলো তো মাঝে মাঝে আমি সোশ্যাল মিডিয়া তো দেখি, যে এতে বোঝা যায় যে ওনারা যেভাবে স্টুডেন্টদেরকে সামনে রেখে ওনারা ভেবেছেন বাংলাদেশে যেভাবে ঘটনাগুলো হয়েছে এইভাবেই বুঝি এখানে হয়ে যাবে। আর এটা ভারতবর্ষ, এটা বাংলাদেশ না, নেপাল না, এটা ভারতবর্ষ। আর এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি, কাজে এই জায়গার মধ্যে এইভাবে করে যে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে, সেটা কোনোদিন এখানে সম্ভব হবে না। Security forces and Manipur police intensified anti-insurgency and anti-narcotics operations across the state on Tuesday, arresting 6 persons, including an alleged active cadre of the proscribed Revolutionary People's Front, People's Liberation Army, RPF/PLA, and a suspected major drug supplier wanted in multiple narcotic cases. The operations also led to the seizure of 3.66 kg of suspected opium and approximately 1.6 kg of suspected brown sugar, police said. According to the police control room, the overall law and order situation remained normal during the last 24 hours as security forces continued intelligence-based search operations and area domination exercises in fringe and vulnerable areas across Manipur. In a major anti-insurgency operation, security forces arrested Samurai Lakpam Sandit Sharma, whom police identified as an active RPF/PLA cadre allegedly involved in extortion and recruitment from the Bakhal area of Kachar district in neighboring Assam. He is a native of Kalinagar in Chiribam district and is presently residing at the Hengang in Imphal East district, police said. Alongside the crackdown on insurgent-linked activities, security agencies also stepped up their campaign against drug trafficking across the state. During a joint raid, Manipur police and the Narcotics Control Bureau arrested Nengjautam alias Taunpi from Hotel Venus in Churachandpur district. Police alleged that he is a major drug supplier wanted in multiple cases registered under the Narcotics, Drug and Psychotropic Substances NDPS Act by the NCP, the Directorate of Revenue Intelligence DRI and Manipur Police. In another anti-narcotics operation carried out in and around Matripukri Bazaar, security forces seized 3.66 kg of suspected opium and arrested Anil Das, 75, Roshan Basnet, 48 and Goma Karki, 33. Police said Anil Das is originally from Belkati and currently resides in Mantripukri, while the other two are residents of Kanglang Tongpi, Hatikhua. Meanwhile, Manipur police arrested Mrs. Tinye Tado, 52, of Longpi Kono in Chandel district from the Songcha Kobi village area of Churachandpur district and allegedly recovered approximately 1.6 kg of suspected brown sugar from her possession. Police said investigations into all the cases are in progress. Meghalaya CM Konrad K. Sangma met an official visit to Delhi and met with the Minister for Civil Aviation, Joy Aditya Skinda, and officials to discuss several key agendas. This included the expansion of the runway at Uroi Airport,
Airport, which is set to begin shortly, and the development of Baljik Airport in Karo Hills under a new aviation ministry scheme with an investment of over 60 crores. Additionally, plans for additional helipads and heliports in Meghalaya were discussed, with 3 locations approved. The Union Minister along with CM also launched Mission Golden Spice, a 5-year 175 crore project to promote Lakatong turmeric in Meghalaya, involving area expansion, new technologies and support for farmers. In my visit to Delhi, I also had the opportunity to meet the Honorable Minister for Civil Aviation, including the officials of the Civil Aviation Ministry, and different agendas related to the sector were discussed. The first was regarding the expansion of the runway in Umroi Airport, and we are very happy to inform you that things are moving in the right direction. The tender has been completed, the work has been allotted, and we expect that within a few weeks' time, the actual physical work also for the extension of the runway will start. The Honorable Minister is intending to make a program post the 15th of August to Shillong to come and monitor and look at the entire work progress himself. So we do expect that the expansion work will take place at a very quick pace. At the same time, we had discussed regarding the Baljik Airport in Karo Hills, and the Honorable Minister has informed us that under the new scheme of the Aviation Ministry, the Baljik Airport also will be taken up under the expansion mode, and Government of India. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.